Good morning, students. I hope you all are well and enjoying your summer vacation very nicely. Now, let me start our 12th chapter in GK Animal Worlds. इसमें आपको एनिमल्स के नेम्स बताने हैं और उनकी पिक्चर्स देख के उनके नेम्स को अपन को राइट करना है. तो फर्स्ट इज़ आवर घड़ियाल. ओके, फर्स्ट इज़ आवर घड़ियाल and second is our tapir. Second is tapir. Third is moose. Third is moose. Fourth is our wolverine. Wolverine. Fourth is our wolverine. Fifth is our sloth. Sixth is our gecko. Seventh is our manatee. Eighth is our slow loris. Ninth is our mandrill. Okay, I hope you all are understand this animal world, and by the pictures you also write their names in our notebook. Now our 13th chapter is natural fibers. Okay, first is silk is an animal fiber obtained from the cocoon of a silkworm. सिल्क क्या है? एक एनिमल फाइबर है जो किससे पाया जाता है? कोकोन ऑफ सिल्क फॉर्म से. तो ये ट्रू है या फॉल्स है? इट्स ट्रू. कॉयर फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हस्क ऑफ द बनाना प्लांट. कॉयर फाइबर्स जो होते हैं वो क्या बनाना प्लांट से मिलते हैं? नो, इट्स फॉल्स. इट इज़ हस्क ऑफ द कोकोनट प्लांट. दिस इज़ फ्रॉम द कोकोनट प्लांट. Cotton is a soft fiber that grows around the leaves of the cotton plant. False, because cotton क्या है? एक सीड से आती है, मतलब एक बीज से उसकी ग्रोथ होती है, नॉट अ कॉटन प्लांट के लीव्स से. Fourth is our the flax fiber is obtained from the stem of the plant. It's true. Hemp fiber is obtained from the seed of the plant. It's called false. It is present by the talc of the plant. Jute is extracted from the bark of the white jute plant. It's true. Pure Kashmiri fiber is a product of Kashmiri rabbits. जो कश्मीरी फाइबर्स होते हैं, जूट होते हैं, वो क्या कश्मीरी रैबिट से बने हुए, कश्मीरी रैबिट्स के हेल्प से बने होते हैं? नो, इट्स बाय गॉड्स. कश्मीरी गॉड्स के थ्रू अपन इस प्रोडक्ट को बनाते हैं. द सीसाल फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट. इट्स कॉल्ड ट्रू. एंड नो विद डायरेक्ट palm leaves are a source of natural fibers. The palm leaf fiber is used in making ropes, hats, brushes, fishnets and brooms. Palm leaves क्या होती है? Natural fibers होती है, source of natural fibers. और इस लीफ से अपन क्या बना सकते हैं? ropes, hats, brushes, fishnets and brooms. Now our 14th chapter is plant adaptations. First, swollen and spongy petioles or leaf stalks keep the water hyacinth afloat. True. Onion and garlic bulbs have modified leaves from storing food. True. Plants like sugarcane have prop roots that grow from the lower nodes of the plant. False. No, it is from stilled roots. Found in the Sundarbans, the Sundari tree has pneumatophores that grow upward from its root system.
to take in oxygen from the air? It's true. Weak stemmed plants like money plant develop roots from nodes that help them climb? True. A potato is rhizome, a swollen underground stem characterized by eyes? False. It is by tuber. Epiphytes are plants that have aerial roots to absorb moisture from the host plant? False. It is from the air, not by the host plant. The leaves of the cactus plant are capable of photosynthesis? False. No. Stem of the cactus plant are capable of photosynthesis. Intensive roots of grass in the prairies absorb more moisture from the ground and prevent the grazing animals from pulling them out? True. Trees, while needle-like leaves, retain less water than broad leaves? No. False. It is retain more water than broad leaves. No, with Derek. The term plant is also used for a factory place where an industrial or manufacturing process takes place. प्लांट को हम और कहाँ यूज़ करते हैं प्लांट वर्ड को? जैसे कोई फैक्ट्री होती है, किसी का कोई पोल्ट्री फार्म, या अपन प्लांट बोल सकते हैं ना, जैसे माइंस का प्लांट है, किसी का भी प्लांट अपन उसे बोल सकते हैं. एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है उसे भी अपन प्लांट बोलते हैं. ओके. 15th chapter is our robots. From R2D2 in Star Wars to Wall-E in Wall-E. From Wiki in Small Wonder to Doraemon in Doraemon. Robots have been extremely popular in fiction. रोबोट्स किसके लिए जाने जाते हैं? अब फिक्शंस का यूज़ करने के लिए. एज़ यूजली जो अपन काम, जो इंस्ट्रक्शन उन्हें देते हैं, उस काम को इंसान नहीं करके रोबोट कर सकते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं. In real life, the robots have not reached the same level as their esteemed fictional counterparts. But every year, more and more advances are being made in this field. The modern term robot comes from the Czech word robota, meaning forced labor. It was introduced in Karel Čapek's play RUR, Rossum's Universal Robot. रोबोट कहाँ से आया? टर्म रोबोट सीजैक वर्ड रोबोटा से, जिसका मीनिंग क्या है? फोर्स्ड लेबर. और सबसे पहले ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? कैरल कैपेक में प्ले में, जिसको कौन सी यूनिवर्सल में? RUR, Rossum's Universal Robots. The word robotics first appeared in Isaac Asimov's story run around 1942. In this story, he gave his famous 3 laws of robotics. First law is a robot may neither injure a human being nor through inaction allow a human being to be harmed. Second law is a robot must obey the orders given to it by human beings except in situations where such orders would conflict with the first law. Third law is a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or the second law. AIBO. AIBO is a series of robotic pets manufactured by Sony. Most of these models were inspired from dogs and were dog-like, while some others were inspired from lion cubs and space explorers. Activated in 2015, Sophia is a social humanoid robot that can display more than 50 facial expressions. In October 2017, Sophia became a Saudi Arabian citizen, the first robot to receive the citizenship of any country.
The first RoboCup games were held in 1997 in Nagoya, Japan. First held in 2004, the World Robot Olympiad is an international robotics competition for elementary, junior high and senior high students aged 19 and below. Now our 16th chapter is famous scientist. So complete the crosswords with the help of the given clues. अपन को सबसे पहले ये दोनों चेक करके अपन को इसमें ब्लैंक कॉलम्स में इन्हें अप एक्रॉस और डाउन के फॉर्म में इसे फिल करना होगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. तो फर्स्ट अपन को दे रखा है डाउन के उसमें. तो फर्स्ट इज physicist and chemist who conducted pioneering research on radioactivity. ऐसे कौन पर्सन थे जिन्होंने फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट थे वो, और पायनरिंग रिसर्च की थी उन्होंने रेडियो एक्टिविटी में. तो मैरी क्यूरी, MARIECURIE. सेकेंड इज discovered the principles underlying electromagnetic induction, diamagnetism and electrolysis. तो उनका क्या नेम था? माइकल फैराडे. MICHAELFARADAY. Third is formulated the laws of motion and universal gravitation. Third is formulated the laws of motion and universal gravitation. न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटेशन लॉ लाए थे, तो उनका फुल नेम क्या था? इसाक न्यूटन. थर्ड इज इसाक न्यूटन. फोर्थ इज डिस्कवर्ड पेनिसिलिन. पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. फिफ्थ इज डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. किसने बनाई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने. फिफ्थ इज अल्बर्ट आइंस्टीन. सिक्स्थ इज द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क. The Wizard of Menlo Park is Thomas Edison. Seventh is contributed to the design of the current alternating current AC electricity supply system. निकोला टेस्ला. सबसे पहले किसने AC का डेवलप किया था? निकोला टेस्ला. Eighth is made observations that laid the foundation for modern physics and astronomy, which is Galileo. Ninth is received the Nobel Prize for his understanding of atomic structure and the quantum theory. Ninth is Niels Bohr. Now students, our 17th chapter is inside the internet. So fill in the blanks using the help box. A dash is the short term form of a weblog. मैंने आपके यहाँ नीचे नंबर्स डाल रखे हैं कौन सी किसका है. तो फर्स्ट इज ए ब्लॉग. 2 download means to copy data from one computer system to another using the internet. The unique address of any web document is called as URL. Fourth, the @ sign is used in email address between the user's name and the domain name. Fifth, to surf means to move from one website to another on the internet. Sixth, a browser is a software program that enables you to view web pages and other documents on the internet. Seventh, www in a URL stands for World Wide Web.